अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशीर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हंद तफसील पार्लियामेंट किस बजट इजलास दौरान ये आज मरकजी वजीर खजान निर्मला सीतारमणन आम बजट 2022-23 पेश करान वोन जे बजट तैयार करने दौरान प्रेथ वर्गो ख्याल थावना आमुत बजट पेश करने ब्रोह जमींदारन सनतकारन नौजवानन तो आम लूकन सहित सलाह मशवर करना आमुत युद्ध जन बजट ब्रोह कुन इन पत प्रेथ अकिस राहत वात तत हिजब इख्तलाफ जम्मू तरफ बजटस हवाले कया सवाल ते खड़ा करना आमत कया मरकजी वजीरों तरफ ये बजटस हवाले ट्वीटर्स पर ट्वीट करान वन आव जो मौजूद बजट आम लूकन हिंद मफाद नजर तल तैयार करना आमुत तत कांग्रेस लीडर राहुल गांधीन ट्वीटर्स पर ट्वीट करान वोनमुत बजटस मज जमींदारन नौजवानन बेरोजगारन तो सरकारी मुलाजमन हिंदिस हकस मज कह खास नजर गछान बल्कि प्रेथ कह तबक नजरअंदाज करना आमुत Coming to the budget estimates, Honourable Speaker, sir, the total expenditure in 22-23 is estimated at 39.45 lakh crores, while the total receipts other than borrowings are estimated at 22.84 lakh crores of rupees. The revised fiscal deficit, Honourable Speaker, in the current year is estimated at 6.9% of the GDP as against 6.8% projected in the budget estimates. The fiscal deficit is in 22-23 is estimated at 6.4% of the GDP, which is consistent with the broad path of the fiscal consolidation announced by me last year to reach a fiscal deficit level below 4.5% by 25-26. While setting the fiscal deficit level in 22-23, I am conscious of the need to nurture growth through public investment to become stronger and sustainable. I will now move to part B of my speech. Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. Telecom sector. Telecommunications in general and 5G technology in particular can enable growth and offer job opportunities. Required spectrum auctions will be conducted in 2022 to facilitate rollout of 5G's mobile services within 2022-23 by private telecom providers. A scheme for design-led manufacturing will be launched to build a strong ecosystem for 5G as part of the production-linked incentive scheme. To enable affordable broadband and mobile service proliferation in rural and remote areas, 5% of annual collections under the Universal Service Obligation Fund will be allocated. This will promote R&D and commercialization of technologies and solutions. Our vision is that all villages and their residents should have the same access to e-services, communication facilities, and digital resources as urban areas and their residents. The contracts for laying optical fiber in all villages, including remote areas, will be awarded under the BharatNet project through PPP in 22 and 23. Completion is expected in 2025. Measures will be taken to enable better and more efficient use of the optical fiber. Inclusive development, our second priority. Agriculture. The procurement of wheat in Rabi 21-22
and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. 2023 has been announced as the International Year of Millets. Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally. To reduce our dependence on import of oil seeds, a rationalized and comprehensive scheme to increase domestic production of oil seeds will be implemented. For delivery of digital and high-tech services to farmers, with involvement of public sector research and extension institutions, along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chains, a scheme in PPP mode will be launched. Atmanirbharta in defense. Our government is committed to reducing imports and promoting Atmanirbharta in equipment for the armed forces. 68% of the capital procurement budget will be earmarked for domestic industry in 22-23, up from 58% in 21-22. Defense R&D will be opened up for industry, startups, and academia, with 25% of defense R&D budget earmarked. Private industry will be encouraged to take up design and development of military platforms and equipment in collaboration with DRDO and other organizations through SPV model. An independent nodal umbrella body will be set up for meeting wide-ranging testing and certification requirements. Current coverage of Har Ghar Nal Se Jal is 8.7 crores. Of this, 5.5 crore households were provided tap water in last 2 years itself. Allocation of 60,000 crores of rupees has been made with an aim to cover 3.8 crore households in 2022 and 23. Road transport. PM Gati Shakti Master Plan for expressways will be formulated in 22-23 to facilitate faster movement of people and goods. The National Highways network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23. 20,000 crores of rupees will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources. The data exchange among all mode operators will be brought on unified logistics interface platform, designed for application programming interface. This will provide for efficient movement of goods through different modes, reducing logistics cost and time, assisting just-in-time inventory management, and in eliminating tedious documentation. Most importantly, this will provide real-time information to all stakeholders and improve international competitiveness. Open source mobility stack for organizing seamless travel of passengers will also be facilitated. Contracts for implementation of multimodal logistic parks at 4 locations through PPP mode will be awarded in 22-23. In 22-23, 80 lakh houses will be completed for the identified eligible beneficiaries of the PM Awas Yojana, both rural and urban. 48,000 crores is allotted for this purpose. The central government will work with the state governments for reduction of time required
for all land and construction related approvals, for promoting affordable housing for middle class and for the economically weaker sections in urban areas. We shall also work with the financial sector, regulators, to expand access to capital along with reduction in cost of intermediate. यपर मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमणन मरकजी बजटस मज 35,568 करोड़ रुपये जम्मू कश्मीर बाबत मुश्कस करना आमत यथ मज 33,993 करोड़ रेवन्यू खजार पूरा करने बाबत थावन आमत यल जन 269 करोड़ डिजास्टर झील डल च बाजाबाद कवरी बाबत 273 करोड़ निगीन बाबत 130 करोड़ तो 500 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर बाबत मुश्कस करने आमत। डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट सद सदारत मज आज श्रीनगर मज मीटिंग हूं सांस कर आमुत यथ दौरान चीफ हॉर्टिकल्चर अफसरों तो महकम के दोमो जिम्मेदारों मीटिंग में शिरकत कर। अत मौके पे महकम किस कामकारस हवाले कथन दल दिन आव तत एजाज अहमदन मीटिंग मज मौजूद अफसरन हिदायत दितमित मुख्तलिफ स्कीम जमीनी सतरस पे अमलावनस हवाले गसन चुकसान फरज अंजाम दिन यिन युत जन बागवालन यमन स्कीमन हुंद फायदे वात। यल जन एजाज अहमदन जराए इबलाग सत करान वोन मीटिंग हिंद संज करनु मकसद अमली मुतहरिक करने युत जन तिम कदम जमीनी सतरस पे अमलावन यन यमन कदमन हवाले गोड़े जानकारी प्रोग्रामन हुंद संज त महकम तरफ करने आमुत। कोई रोल ही नहीं है, बीमस भी करा दो। एएसओ पे देखो, आप सीएचओ हो, आप देखो कितना ले रहे हैं, इसको लेना कितना है, खुदा रहा ये तो देखो हिसाब कर रहे हो, ठीक है क्या गलत ये वो आपने पहले भी एक्सपीरियंस है, लेकिन कोई रोल ही नहीं है, बीमस भी करा दो। एएसओ पे देखो, आप सीएचओ हो, आप देखो कितना ले रहे हैं, इसको लेना कितना है, खुदा रहा ये तो। आज जो हमने मीटिंग की तो ये हमने जो टारगेट्स और आर्डर्स हैं, वर्क आर्डर्स, इसके बारे में हमने तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर, चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर जो और हमारे डेवलपर्स हैं 11 लोग, इन सबों को बुलाया था। तो इसमें इसका यही मकसद था कि जो हमारा एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम है सरकार का, हाई डेंसिटी ग्रोवर्स तक पहुंचाना, इसको प्रायोरिटाइज करना, इनको जानकारी देना, इसके बारे में हमने आज सख्त हिदायत यही दी कि हमारे डेवलपर्स को भी ये गुजारिश की कि वो जो उनके टारगेट्स हैं वो अचीव करें बिफोर मार्च, ताकि जो हमारा एक टारगेट है इस साल का 500 हेक्टेयर का वो पूरा हो जाए। और अगले साल की जो तैयारी करने हमें 22-23 की, उसमें हमने 1,000 हेक्टेयर करना है आने वाले सालों में हर एक साल। तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है, उसके लिए हमारी नर्सरियाँ तैयार रखनी है एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। तो उसमें हमने अपने CHOs को भी बताया कि इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है, इसमें काम करने की ज़रूरत है, इसको सीरियसली देखने की ज़रूरत है। अवेयरनेस तो हमने काफ़ी सारी की, लेकिन अब काम कर। लाल चौक श्रीनगर मशहूर मार्केट पोलोव्यू मार्केट बतौर एहजाज बंद वुचन आमुत। यथ दौरान मुकामी दुकानदारों तरफ वन आव ज इंतजामिया तरफ यह मार्केट हेरिटेज मार्केट बनावनस हवाले कदम तुलने आमत, ताहम मार्केटस नजदीक माकूल पार्किंग हवाले कह कदम तुलना आमुत, यम किन मुकामी दुकानदार एहजाज करनस पे मजबूर सपद। मुकामी दुकानदारों तरफ इंतजामिया मांग करना आमत ज अथ मामलस कुन गसे जोन दिन युन युत जन तिमन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने यन। 2-4-5 महीने से हम लगातार इनके साथ वी आर इन टच विद देम कि अगर हमको आपको ये बनाना है हेरिटेज मार्केट, वी आर विद इट, हमें उसमें कोई किसी किस्म का कोई गलत शिकवा नहीं है, वो हम उनके साथ हैं। लेकिन हमारी कुछ डिमांडें हैं वो पहले हमें प्रोवाइड पूरे कर लीजिए। बेसिक है हमारी मतलब पार्किंग फ्रॉम बोथ साइड्स, नियर पार्किंग, वो तो जरूरी होना चाहिए, फिर आप काम शुरू करें। आज क्या उन्होंने किया, सडनली जो हमारी पार्किंग अलॉट हुई थी पीछे की तरफ से वो उन्होंने बंद कर दी। हमने गाड़ियां यहाँ रखी, फिर उधर से ट्रैफिक वाले आ गए, उन्होंने हमारी गाड़ियों, इसीलिए हम बेबस हैं, हम क्या करेंगे। हम हाँ, जब तक ना हमारी डिमांडें पूरी हो जाएंगे तब तक तो दुकानें बंद। भटनूर त्राल के नौजवानों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज गिंद द्रकन बापत ग्राउंड तमीर करने हवाले कई फिर इंतजामिया मांग करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत, यम किन मुकामी नौजवान खिलाड़ियन
गिंदनस द्रकनस में सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी नौजवानों तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दिन युन यत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करनी। सर हमारी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ग्राउंड की बहुत ज्यादा किल्लत है। हम यहाँ पे हमने सरकार से बहुत ज्यादा अपील की, बहुत बार हमने ये एप्लीकेशंस दे दी त्राल तहसील ऑफिस में, लेकिन सर हमारी तरफ किसी ने भी कभी भी तवज्जो नहीं दी। हम यहाँ पे अब मजबूर हो रहे हैं, हम सड़कों पे खेलने के लिए मजबूर हो रहे हैं और यहाँ पे बहुत खतरा भी है। गाड़ियां चलती है यहाँ सड़क पे, कभी भी किसी बच्चे को भी टक्कर आ सकती है, हमें भी किसी को टक्कर आ सकती है। लेकिन हमने बार बार गवर्नमेंट से अपील की, 100 बार हमने अपील की। पटवारी साहब के पास हम गए, तहसीलदार साहब के पास गए हम, LGM साहब के पास गए हम, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि गवर्नमेंट जो है हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। तो हमें यहाँ ग्राउंड की किल्लत है, तो मेहरबानी करके हमें ग्राउंड फराहम करना चाहिए। ये प्रॉब्लम कि ये गाँवस मज ग्राउंड कहें तोर लट लेच एप्लीकेशन पे दिस पटवारी साहबस तहसीलदार साहबस गई त्राल दोप तिमन यस गाँवस मज गाश चराई या गाश चराइन जमीन दिव सा ग्राउंड तुम हेकि वुचित यपर सड़क पे गिंदन ये लड़कन सारी लड़के गिंदन सड़क पे गई लिहाजा गवर्नमेंटस अपील कर दिव ग्राउंड। गुंडावाली शुपियां गुजर बस्ती हिंदो लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज लूकन कय्याहो रंगो मुश्किल वेतरन पेवान तो अमे हवाले कय्याय फिर हुकामन जान फराहम करना आय, ताहम छुना आज ताम का कदम तुलना आमुद तो मुकामी लूको तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमद यह इलाक गि जिले पुलवाम सत मुंसलिक करने युन युत जन इलाकस मज लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। गांडावाली डिस्ट्रिक्ट शोपियान के साथ है ये, लेकिन हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। इसलिए हमें गवर्नर साहब से मौदमाना अपील है कि हमें अगर पुलवामा के साथ जोड़ा जाए तो यहाँ से 10 मिनट लगते हैं हमें रोड तक, तो हमें सब फैसिलिटी मिल जाएंगी। अगर हम शोपियान के साथ रहे तो कोई फैसिलिटी हमको नहीं मिलेगी, ना बिजली है, ना पानी है, ना स्कूल है, ना कोई। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमणन ये आज आम बजट पेश कोर तब नई दिल्ली अंदर कांग्रेस पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत। यथ दौरान बजटस मज खामियन हवाले जराये इब्लाग जान फराहम करने। बजट का सार अगर देखें तो इस बजट का सार है कुछ नहीं, नथिंग। ये इस बजट का सार है और विशेष तौर से ये बजट और वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार से ये पेश किया, ये वित्त मंत्री और सरकार के जिद्दीपन, उनकी कठोरता और उन निर्दयता का सूचक है, उसे दर्शाता है। देश के गरीब के प्रति, देश के नौकरी पेशा व्यक्ति के प्रति, देश के मध्यम वर्ग के प्रति, देश के किसान के प्रति, देश के अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों के प्रति और ग्रामीण अंचल में रहने वाले, शहरों में रहने वाले साधारण मजदूर के प्रति यह एक क्रूर मजाक इस देश के लोगों के साथ है। गरीब की मदद के लिए एक शब्द बजट में नहीं है, रोजगार सृजन के लिए बजट में एक शब्द नहीं है, महंगाई पर नियंत्रण के लिए बजट में एक शब्द नहीं है, गरीब तक पैसा पहुंचाने के लिए बजट में एक शब्द नहीं है, बजट में किसी वर्ग को टैक्स रिलीफ देने के लिए एक शब्द नहीं है। लोक कल्याण को जैसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया हो। मैं खास तौर से चिदम्बरम साहब ने आपका ध्यान आकर्षित किया कि हर प्रकार की राहत और मदद यानी सब्सिडी में कटौती की गई। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो आज सबसे ज्यादा है, पिछले साल के बनिस्बत 704 करोड़ की कटौती हुई। किसान की खाद
कि सब्सिडी में 35,000 करोड़ की कटौती हुई, गरीब को मिलने वाले राशन की दुकान पर भोजन में 80,000 करोड़ की कटौती हुई, किसी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में 500 करोड़ की कटौती हुई, यहां तक कि मजदूर की नरेगा स्कीम के अंदर भी 25,000 करोड़ रुपया काट लिया गया। 27% इस देश में गरीब, साधारण और मध्यम वर्ग को मिलने वाली राहत में कटौती की गई, जो अपने आप में एक निर्दयी पूर्ण निर्णय है। शायद पूंजीवादी और पूंजीपति जो इस सरकार के मित्र हैं वो तो माफ कर दें, पर इस देश का गरीब और मध्यम वर्ग भारतीय जनता पार्टी की इस मोदी सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। बजाय इसके कि गरीबों को राहत दी जाए, बजाय इसके कि बहुत अमीर 142 लोग जो हैं, जिनकी पूंजी 23,14,000 करोड़ से बढ़कर 53,16,000 करोड़ हो गई, उनसे अपनी पूंजी साझा करने के लिए कहा जाए, ये सरकार ने एक पूंजीवादी बजट दिया। कोई प्रश्न अब आप पूछना चाहें तो उसका स्वागत है। We'll go one by one. Can we start with PTI, ma'am, and I'll come to you. Mr. Sanjeev Chopra. नाजरीन, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस यस जन कांग्रेस तरफ नई दिल्ली अंदर करना आई, यथ मज बजटस हवाले वन आव बजटस मज आम लूकन, बेरोजगारन, नौजवानन तो द्रजरस हवाले कह तुथ चीज लबन यम सत आम लूकन राहत वात। कांग्रेस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली अंदर तो अत सत अगर हिजब इख्तलाफ कन दोम लीडरन हज कत करो, तमो लीडरों तरफ तस आज बजट पेश करना आय, अत पे कई सवाल खड़ा करना आमत। तो रूजू गुलिस्तान न्यूज़ वुचान। गुलिस्तान न्यूज़ पे 5 का 5 खसूसी प्रोग्राम नशर सपदन वोल, यथ मज अजकिस बजटस युस जम्मू कश्मीर हवाल बजट पेश करना आव, तथ पे खसूसी कत सपद तो क्या मेहमान तहन प्रोग्रामस मज। मे दियो फिलहाल इजाजत, खुदायस हवाल।